Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to the class of Principles of Commerce by me, your course instructor Sumaira Mahmood. So in today's class, we will start our chapter that is your advertising. It is very interesting chapter, and I hope so you all will take a very good interest in this chapter. It is the chapter which we have done in different ways in many chapters, like we have done in marketing, we have done in you can say wholesaling, retailing also, that every person needs to advertise nowadays. Our business is very much boost up by doing a powerful advertising. Okay, so advertising has different means. It can be done by the electronic and non-electronic ways. It depends upon at the mind of the reader or the customer with whom we are focusing on. Now let's proceed towards your this is the description you all can see on the screen, and meanwhile you all have to open your manuals with me. You all have these notes with you in your manuals or principles of commerce. This will be your page number, if I can show you. It is mentioned over here or for me. Yes, it will be your page number 72. Okay, you all can check from your manual. This is your page number 72 available in your manuals. The notes already provided by me. Okay, now let's proceed towards your chapter or partnership. Sorry, your chapter advertising. Sorry, we have a number one point is advertising. Advertising, basically, if someone asks you what is advertising, so you have to consider in your mind that it is your paid form of non-personal presentation of goods and services to a group of person. It means that we are basically paying someone to do our advertising, to do the advertising for our business. It means if we are not paying any amount to a person, so that person is not willing to do a good advertising for our business. By an identical sponsor, it means we can find a good sponsor for our business, so that business can be more powerful and expressively advertised in the view of customers. कस्टमर के सामने कोई एक इतना अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट शो किया जाएगा जो कि रियली इन्फ्लुएंसिव हो हमारे कस्टमर्स के लिए. By advertising, the goods and services are introduced to general public. Definitely advertising, we are doing advertising for the general public, for the customers, for the consumers. These two terms are different, though it is a message is given uh, um, from the rent price quality. For it is not the rent, it is you can delete it. It is for the price quality quantity, or it should be, you can say, for the brand. You can make it brand. It b is missing over here. Okay, and this word is brand, make it correctify. This is your brand, brand. Okay, this is your brand. And though it is a message given about the brand, about the price and quality and variety of about the product, and how that features really work of on the mind of the customers. यानी brand influence करता है, हमें low price influence करती है, quality of the product influence कर रही है, यानी ऐसा कौन सा factor है जो कि बहुत dynamically आपके mind पे influence कर रहा है. कस्टमर्स बिकम वेल अवेयर ऑफ कॉम्पिटिटिव ब्रांड्स, यानी कस्टमर्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ में अवेयर हो चुके हैं अबाउट द डिफरेंट ब्रांड्स. लाइक यू कैन सी करंटली अगर हम लोग मार्केट में मूव करते हैं, सो वी आर वेल अवेयर अबाउट द डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अगर आप कॉस्मेटिक की बात करें, अगर आप क्लोथिंग की बात करें, अगर आप गाड़ियों की बात करें, तो वी हैव डिफरेंट वराइटीज, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस, different diversifications of the product, and are able to choose the best one. And then we are choosing the best one according to the available commodities and according to your choice of the product, according to your likeness. Okay, so you are able to choose the best one. Okay, now the purpose of advertising. And the purpose of advertising to enable the public to know the features and uses of product. It means you are letting the customers to know about the feature and the uses of the products. Okay, so and overcome the
tradition and prejudices that maybe reduce the competition. There are some features and some uses that influence to reduce the market competition, like you can say the budgeting policy, the market competitions when there are numerous competitors, until unless the persons are reducing the price, then to make easy and increase the sale of present products. Okay, so we have to make our sales easy and flexible for the customers to maintain the consumer awareness. Okay, how we are doing the advertising? The main purpose of the advertising is to aware the customers about the current market competition. Okay, to bring about the advertisement, we are doing advertisement in the newspaper, on the TV commercials, on your billboard, or by the, you can say, text messaging. You are receiving nowadays electronic messages, and you are using your you can say some marketing. आपके पास कुछ marketing में जब आप लोग कोई भी windows open करते हैं, email open कर रहे होते हैं, कुछ search कर रहे होते हैं, तो side by side आप लोग के पास कुछ ना कुछ advertisements आ रहे होते हैं. ठीक है. Now, and what will happen to reduce the amount of personal sales efforts required to receive an order? So this will, if you are not doing your good sales, so definitely your advertisement is affecting your sales. ठीक है, आपकी जितनी भी powerful advertisement होती है वो आपकी sales को increase करती है, customers acknowledgement बढ़ जाएगी, लोग आपकी product को ज़्यादा से ज़्यादा जानने लग जाएंगे, तो definitely आपकी sales of the product भी increase हो जाएगी. ठीक है. टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट मॉडल. अब मार्केट के अंदर अगर आपको अपने प्रोडक्ट के अंदर कोई भी डाइवर्सिफिकेशन लेके आएंगे, मॉडिफिकेशन लेके आएंगे, तो वो तो न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट है वो फॉरन बूम नहीं करती. नॉट एवरी टाइम, इट इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर्स इफेक्टिवनेस. सम टाइम लाइक देखें, अगर आपके पास पहले जो मोबाइल फोन्स थे वो बटन्स ऑपरेटेड थे. Now you people are having your touch mobile system. So the touch mobile system is capture the market, whole market very easily. Because it makes the customer easiness, and it really impress the customers. So again it depends upon your product diversification कि आपने प्रोडक्ट में क्या मॉडिफिकेशन और क्या डाइवर्सिफिकेशन की है जिसकी वजह से लोग आपके प्रोडक्ट के अंदर या आपके प्रोडक्ट में डायरेक्टली इंटरेस्ट लेने लगे हैं. ठीक है. नाउ वी आर हेयर media of advertising. We have different media for the advertising, and what are those media work upon? We have one print media, and then non-print media, electronic media, and wait for a while. Yes, advertising media are the forms, that means of communication by which here the by इसमें से e आप लोग कट कर दीजिए, by which advertised message reaches the audience. हमारे पास जो मैसेज है वो ऑडियंस तक रीच करता है by using the means of advertising. Then we have two types of advertisement over here, electronic media and non-electronic media. electronic का मतलब है जिसमें हम कोई भी digitalize use कर रहे होते हैं, like your audio video, your television, and these are all your या आप लोग के पास जो टीवी स्लाइड्स चल रही होती हैं, ये सब आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स में होती हैं, जिसमें हमारे पास ऑडियो मीडिया आ जाता है, वीडियो मीडिया. एंड देन वी हैव अनदर इज योर प्रिंट मीडिया, जो आपके पास नॉन इलेक्ट्रॉनिक में होता है. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक में ऑडियो वीडियो, एंड देन नॉन इलेक्ट्रॉनिक इज योर प्रिंट मीडिया. So let's come towards your electronic and non-electronic. First, I'm coming towards your non-electronic. That is your print media. Is your non-electronic. Okay. Now, before proceeding towards, yes, this is your print media, your non-electronic. Your print media includes your newspaper, magazines, your pamphlets, बिलबोर्ड. आपने देखा होगा आपके घर न्यूज़पेपर आते हैं, मैगजीन्स आते हैं, उसमें कितनी सारी एडवर्टाइजमेंट हुई हुई होती है. कुछ जर्नल्स पब्लिश होते हैं, उसमें भी एडवर्टाइजिंग होती है. जर्नल्स जो है वो टॉपिक बेस्ड होते हैं, इसलिए हम उनको जर्नल कहते हैं. एंड मैगजीन आर यूजिंग फॉर पब्लिसिटी ऑफ सोशल मीडिया. जो सोशल होती है उसके लिए मैगजीन्स होते हैं. देन वी हैव पैम्फलेट, जो एक खास स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंट्रोडक्शन दिया जाता है कस्टमर की अवेयरनेस के लिए. आप लोग देखते होंगे कि आपके होम टू होम आपको पैम्फलेट डिलीवर हो रहे होते हैं फॉर द प्रोडक्ट अवेयरनेस.
you can see some billboard on the side of your roads. And yes, it is very expensive. Skywriting, you can see in some movies. It is not available over here in Pakistan, but it is very common internationally that we have skywriting, where aeroplane is writing on the sky the name of the you can say products, and it is using a fume. ठीक है, एक fumes अपने प्लेन से, प्लेन मूव होता है, फ्यूम निकलता है जिसपे स्काई पे आपके पास नेम रिटन नजर आता है. सो दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, you can say media of advertising. First of all, we have newspaper, then we have magazines and journals. You can see, number one, we have newspaper, then we have magazines and journals, then we have billboards and hoardings जो आपको अपने side by side roads में नजर आती हैं. Currently in our government they have stopped the billboards जो कि आपके पास पहले boards पे लगे होते थे due to some disasters happening. So we stopped क्योंकि passengers पे sometime हैवी you can say हैवी रेन है, या एयर बहुत वेदर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, जिसकी वजह से वो पैसेंजर्स को वो स्ट्रांग बिल बोर्ड्स हर्ट करते हैं. तो दैट्स व्हाई दे वर रिक्वेस्टिंग कि बिल बोर्ड्स बोर्ड ना हो, इट शुड बी ऑन वॉल. Your advertisement should be placed on the wall. Okay, one by one I'm going through this, and we have acha, I'm going through the headings of the newspaper, magazine, billboards, and then we have pamphlets and handbills. Okay, and then we have skywriting. Okay, no, no, not this one. Skywriting, these are your five headings. Yes, number one, newspaper. Newspaper are issued on daily and weekly and provide latest news and information to the general public. What is we are finding important newspaper? We are getting the information, okay, to the general public. So general public, if they want the newspaper, तो general public को newspaper में नजर आएगा कि आज क्या होने वाला है और क्या हो गया, एंड व्हाट आर द लेटेस्ट यू कैन से द चेंजेस इन द मार्केट अबाउट पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल. तो न्यूज़पेपर आपकी तमाम न्यूज़ को कैरी कर रहा होता है, जो कि पॉलिटिकल भी होती हैं, सोशल भी होती हैं, इकोनॉमिकल भी होती हैं. ठीक है, दे आर गुड एंड इफेक्टिव मीन्स ऑफ मेकिंग द गुड्स एंड सर्विसेज नोन टू द प्रोस्पेक्टिव कंज्यूमर. अब वो कंज्यूमर फॉर एग्जांपल जिनको उस प्रोडक्ट को यूज करना है, तो वो रिलेटिवली जितने भी न्यूज अपडेट्स हैं वो आप लोगों को बाय मीन्स ऑफ न्यूज़पेपर मिल जाती हैं. डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ रीडरशिप ऑफ द न्यूज़पेपर, अगेन डिपेंड करता है कि जो आपका रीडरशिप है उसका इंटरेस्ट ऑफ रीडिंग क्या है. वो सोशल साइड पे है, पॉलिटिकल साइड पे है, इकोनॉमिकल साइड पे है. कुछ लोग सिर्फ बिजनेस का पेज पढ़ते हैं, कुछ लोग सिर्फ जॉब के लिए पेज सर्च कर रहे होते हैं, कुछ लोग सोशली मीन सम यू कैन से किसी आर्टिस्ट के बारे में या किसी टीवी न्यूज़ के बारे में, या फिर हमारे पास कुछ स्टोरीज चल रही होती हैं, उन स्टोरीज को फॉलो अप करते हैं. सो देयर आर स्टिल डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीडर्स will spread to the extent. Then we have some magazines and journals. This impact is limited to only some cities. Magazines and journals are not common that every city is not purchasing, because they have a specific and limited price to the consumer. So not every consumer is purchasing the magazines and journal. Rural areas can't be reached because of low literacy rate over here. It is expensive, despite the rural areas are not reaching it. Immediate advertising in magazines is not possible. If you want something immediate, means which we can say very hot news, so you cannot find any immediate news or urgent news, or you can say breaking news in the magazine. आपके पास magazine में कोई भी breaking news नजर नहीं आएगी. Magazines is carrying the long stories and details about the news. Okay, so if you want to see any breaking news or hot news, the current update of the news, you have to go through the newspaper or your television, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. ये नॉन इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्योंकि फास्टेस्ट वे होता है, तो हम सबसे पहले कोई भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को यूज करते हैं, या अपने मोबाइल फोन्स को यूज कर रहे होते हैं. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द गैजेट. ओके, बिकॉज इट्स फ्रिक्वेंटली इन मंथली. हमारे पास मैगजीन्स यूजली मंथली होते हैं, तो मंथली में डेफिनेटली वो आपको ब्रेकिंग न्यूज तो नहीं नजर आएंगी. Billboards and hoarding, they are installed along the important busy roads. Usually billboards उन roads पे लगाया जाता है जो बहुत busy होते हैं, जब यहाँ से सबसे ज्यादा customers आपके move करते हैं.
ताकि कस्टमर्स की अटेंशन, जितने ज़्यादा लोग वहाँ से गुजरेंगे उनकी अटेंशन ड्रॉ होगी towards your marketing sector. They are used to attract the attention of automobile travels and passengers and pedestrian to attract their attention. उनकी attention को attract करने के लिए हम billboards use करते हैं. अक्सर आप लोग को मोबाइल मार्केटिंग भी नजर आएगी जिसमें आपकी एक वैन के ऊपर डिफरेंट कमर्शियल्स लगे हुए होते हैं, जो किसी चिप्स का, कभी किसी कोल्ड ड्रिंक का, और यू कैन से यू स्टार्ट अप एनी न्यू बिजनेस, तो जो डिफरेंट न्यू बिजनेस है उन्होंने भी अपनी वैन्स मार्केट में लगाई हुई होती हैं, जैसे KNNs की हैं, तो ये सारी जो मार्केट्स वैन्स होती हैं, या आपको पेप्सी की वैन्स नजर आएंगी कॉमनली, बोल चैनल है इनकी यूजली आपको नजर आती हैं, जितने भी हमारे न्यूज़ चैनल्स हैं इनकी अपनी जो मोबाइल मार्केटिंग होती है, दैट दे आर डूइंग द मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स बाय ओन सेल्फ राइट नाउ। अगर हमारे पास हम इलेक्ट्रॉनिक की तरफ आते हैं, तो एडवर्टाइजिंग ऑफ योर कैरीम एंड ओबर, दे आर आल्सो यूजिंग देयर ओन मोबाइल मार्केटिंग, के उनकी जितनी भी ऑटोमोबाइल्स यूज होती हैं उस पर उनकी मार्केटिंग हुई भी होती हैं। देन वी हैव अनदर इज योर नियॉन साइन। नियॉन को आप लोग समझते होंगे, इट इज अ स्पार्कलिंग लाइट। नियॉन साइन कैन आल्सो बी यूज्ड ऑन द बिल बोर्ड टू मेक द मैसेज एल्यूमिनेट एट नाइट्स। सो समटाइम नियॉन क्या होता है, वैसे आपको नॉर्मल मैसेज दिख रहा होगा इन डे टाइम, लेकिन इन दी नाइट टाइम जब उसके ऊपर लाइट ऑफ योर कार उस पर रिफ्लेक्ट करेगी, तो वो आपके पास जितनी भी टेक्स्ट है वो हाईलाइट हो जाती है। सो नियॉन साइंस आर यूज्ड एट द नाइट टाइम। इट विल मेक योर advertisement little bit sparkling for the reader. Now next we have the pamphlet. Okay, it is a cheap means of advertising. It has limited effort. जो पैम्फलेट होते हैं यूजली वो बहुत easily accessible होते हैं, लो प्राइस पे बने हुए होते हैं, और उसमें रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है अबाउट योर न्यूली इस्टेब्लिश प्रोडक्ट और न्यूली इस्टेब्लिश बिजनेस। वो वन पेज और बहुत चीपेस्ट रेट में होता है, बिकॉज ऑफ इट्स लिमिटेड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थ्रू दिस मीडियम इज ओनली लो प्राइस गुड्स एंड सर्विसेज। सो यूजली हमारे पास पैम्फलेट जो होते हैं वो न्यूली स्टार्ट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज पे अवेलेबल होते हैं। Then we have skywriting. As I told you, the airplanes are used to write the message by their smoke high on the air. ठीक है, we are using a smoke to write the name and marketing. Before restoring to this method, a previous announcement to this effect is necessary, क्योंकि हम सारे लोगों को एक अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट होने वाली है, देन एवरीवन इज लुकिंग ऑन द स्काई, और वो जो जल्दी से स्मोक एरोप्लेन की रिलीज होती है वो आप पे नेम प्लेस करती है, एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम वो फौरन से रिमूव हो जाती है, क्योंकि हमारे पास क्लाउड्स और इस वो रिमूव हो जाती है फॉर्मेशन ऑफ द एयर की वजह से। ठीक है, दिस मेथड इज कॉस्टली एंड शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि बहुत महंगा होता है और इसकी लाइफ भी बहुत कम अरसे के लिए होती है, यानी विद इन फॉर द फ्यू मिनट्स इट विल बी removed on. So skywriting we are not using in Pakistan, but it is available in the other countries. Now I am proceeding towards your another way of media, that is your electronic media. And for the electronic media, we are using your different ways of electronics, such as your audio media and your video media. Audio means that you can hear something. Audio is listening. तो ऑडियो में हमारे पास सिर्फ रेडियो इज एन ऑडियो मीडियम विच इज ओनली वन लेफ्ट, जो कि हम लोग रेडियो को सुनते हैं। रेडियो इज द ओनली ऑडियो मीडिया। ओके, एंड वी हैव वीडियो मीडिया। वीडियो बहुत ज़्यादा है हमारे पास। इट इज़ नोन एज रेडियो कमर्शियल एड्स कैन बी ब्रॉडकास्ट नेशन वाइड, प्रोविंस और सिटी वाइज। Advertisement can be announced at once and can be changed and stopped at a short notice. To advertise by radio requires purchase of time. Definitely, to for the advertisement, we need to purchase the time, क्योंकि हम एक specific time है, एक आपके पास एक clock time आता है, फिर different commercials आते हैं, तो radios को हम कभी भी for granted नहीं ले सकते हैं। And we are also getting a very clear, अक्सर आप देखें जितने भी मैच होते हैं वो भी आपको बाय रेडियोस नजर आते हैं, सॉरी सुनाई देते हैं, तो उसमें भी लोग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसा नहीं है कि रेडियो हमारी मार्केट से बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ है, स्टिल द रेडियो फंक्शन इज़ अवेलेबल ऑल ओवर द कंट्रीज। आपके अपने जितने भी कार में आप देख लें साउंड सिस्टम्स होते हैं उसमें रेडियो का ऑप्शन स्टिल अवेलेबल है। तो रेडियोज वी कैन नॉट इग्नोर दिस, क्योंकि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ख़त्म हो जाए
लाइक योर टेलीविजन सिनेमा एंड एनी अदर, तो लोगों को सिर्फ जो न्यूज़ ट्रांसफ़र हो सकती है वो सिर्फ रेडियो के ही थ्रू हो सकती है, बिकॉज रेडियो signals are more stronger than the electronic one. While by the newspaper magazines required purchase space is required, radio commercial has different rates at different timings. We have some prime time which is very much costly. Prime time usually कहा जाता है जो कि आपके मेन वॉचिंग लिसनिंग आवर्स होते हैं, like at morning 9 or at evening 6. So these are your prime time where you can see the many listeners is connecting to your radio. Then we have the video media. For the video media, we have number one is your television. Then we have cinema slides. Okay. Yes, you all can see on cinemas we have the advertisement between lawn के आपके पास commercials आ रहे होते हैं. When you are watching the videos, you are getting some commercials of the new products on the internet. You can see the advertisement also on the internet also. Okay. Then we have I will explain one by one. Wait for a while. Okay, these are the advantages then we have. Okay, now not the advantages, we I will just go through the few. Yes, video. And video we have the three over here. You can see the more from your book also. We over here I have just discussed the three video media, that is your television, cinema, slides, and internet. Television is advertising is a virtual media we are using, because we can not only listen, we can see also. टेलीविजन को हम वर्चुअल ऑडियो एंड वर्चुअल दोनों इसलिए कह रहे हैं कि इसमें ना से हम सुन नहीं सकते, देख भी सकते हैं. It is very effective but costly. It brings quick results. TV, it definitely it will give you a very quick response. TV advertising can not only viewed but also heard. इसको हम सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं. It does not require any education or literacy. Everyone can watch and listen and get the knowledge. It has different rates and different limiting. Depend करता है. Nowadays you have even cable, you have different other system, like you have Netflix and a Strom, that you are getting different channels. Then we have cinema slides. It is a type of video media. Okay, and cinema you can see and even listen to, but it is a video media. Goods and services are advertised on the slides during the playing of the film. You are watching your movie, and as you can say कि जब मूवी देखते हैं तो उस वक्त at the time in your cinema you can have 600 or 800 people are sitting over here. So if you're advertising and all those peoples are coming from different locality, different geographical areas, तो जब हम वहाँ पे मार्केटिंग कर रहे होते हैं तो इसका मतलब हमारा एक जो एडवर्टाइजमेंट है वो डिफरेंट लोकेलिटीज और डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में वो एडवर्टाइजमेंट मूव होता है. डिफरेंट लोग उसको देख रहे होते हैं जो अलग अलग जगहों पे रहते हैं, वो वहाँ पे सिनेमा में मूवी देखने आते हैं. तो ये आपकी एक और अच्छी मार्केटिंग है. इट ऑफर्स लिमिटेड जोग्राफिकल रिजल्ट्स एंड इज वेरी शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आता है. And then we have the main advantage is low cost. The cost of the cinema slide is not currently, it is not low cost, but it is low cost as compared to television and internet. It is the most important communication technique of advertising and work through the personal computer. Definitely we are using internet. We all know that you all can see different advertisement when you are moving through your slides. You are using your different internet websites, you are searching your different you can say अगर आप कुछ कोई चीज़ गूगल करते हैं तो you can see some advertisement on your right hand side and left hand side. It can send information across many part of the world in seconds. So ये हमारे पास फास्टेस्ट वे है ऑफ ऑडियो एंड वीडियो को भी शेयर करता है. यू कैन सी द वीडियोस आल्सो, यू कैन सी ऑडियो आल्सो. इसमें आपको टेक्स्ट मैसेज भी नज़र आ जाता है और इट इज द ट्रांसफर. और ये आपके पास अनलिमिटेड एरिया को है, मतलब किसी भी एरिया में जो भी लोग उसको सर्च करेंगे, एनी एज ग्रुप, सो यू कैन फाइंड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ योर प्रोडक्ट. कंपनीज कैन एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट थ्रू इट. यस, दे आर एडवर्टाइजिंग. So it can be used across any part of the world, and companies are using to advertise your product by a best way, and it is a communication technique. So we have to highlight this. Now, next we have the another point is your advantages of your advertising.
Now come towards your page number 75 of your manual. We have advantages and disadvantages in which I would like to focus you that you people have to mainly focus on the advantages. ठीक है? For the examination point of view आप लोग के पास the board में advantages आते हैं, disadvantages of advertising नहीं आता लिखने को. ठीक है? So number one advertising advantage, it's because it creates demand. Okay, then now it creates demand. हम advertising क्यों करते हैं? Because we have to create the demand of the advertisement. Then it create the customer interest, to arise the customer interest. Customer का interest बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा interest, excess of the customer interest, कि उनका customer interest बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो हम advertisement को बहुत strongly show करते हैं, और हम उसके लिए कुछ celebrities को लेते हैं, अपनी quality of the product को बहुत diversify show करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास मेन फोकस क्या होता है, द कस्टमर के लिए एडवर्टाइजमेंट उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है. इट इंक्रीज द सेल वॉल्यूम, एज आई टोल्ड यू दैट योर डायनेमिक सेल्स एडवर्टाइजमेंट विल इंक्रीज योर सेल वॉल्यूम, एंड इट यू डेफिनेटली कीपिंग योर सेल्स पॉइंट रिफ्रेश इन द माइंड ऑफ कस्टमर. तो कस्टमर के माइंड को रिफ्रेश करता है. जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी लास्ट फ्यू डेज बैक कि हमारे पास पेप्सी एंड कोको कोला आर वेरी ओल्ड ब्रांड, बट स्टिल they have their, you can say, advertisements, and still they are refreshing for the young generation. उनका मेन फोकस होता है यंग जनरेशन को. तो जिस तरह हमारी जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती रहती हैं, हमारे पास जो भी जितनी भी ओल्ड हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, नॉन इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, जैसे आपके पास डालडा है, तो हबीब है, दे आर वेरी ओल्ड ब्रांड्स एंड स्टिल दे आर एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स बिकॉज दे वांट टू कैप्चर द न्यू मार्केट, द न्यू जनरेशन. It educates the general public about new use of the product. They want to educate the general public. Yes, they want to get the customer awareness and their education. They have to reduce the competition, because once you have stemmed ऑन द माइंड ऑफ द कस्टमर, तो कस्टमर विल नॉट लूज योर ब्रांड. यानी जो लोग आज से 20 years बैक भी हबीब कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं, वो हबीब ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं. जो लोग कोका कोला ही पीते हैं, वो कोका कोला को ही प्रेफर कर रहे होते हैं. सो दिस इज द मेन कस्टमर likeness. Once they are fixed with any commodity, they will not move. ठीक है. Then we have another point, it creates goodwill. डेफिनेटली गुडविल क्रिएट होती है. गुडविल आपकी इंटेंजिबल है. गुडविल आ जाती है बाय कंटिन्यू रिमाइंडर टू द पब्लिक अबाउट द ट्रेडमार्क्स. हमारे पास यानी कोई भी आप साइन देख लें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक एम का साइन देख लें, तो जो कोई भी छोटा बच्चा है वो एम को देख के बोलता है मैकडोनल्ड. तो ये हमारे पास जो ट्रेडमार्क्स हैं, जो कॉपीराइट्स हैं, वो आपके स्टेम्ड हो जाते हैं इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, कि वो कहीं भी उस लोगों को देखते हैं तो उनको उसकी रिमेम्बरेंस और उसका जो है वो प्रोडक्ट अवेयरनेस आ जाती है, और वो उससे स्टिक्ड होते हैं. It increased the additional sales by encouraging present customers in using the articles more frequently and is increased quantities. Now how they are using their advertisement, अगर अच्छी हो तो आपकी जो additional sales है उसको भी बहुत वर्क ऑन करती है, आपकी सेल्स इंक्रीज होती है. ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से आप कस्टमर के माइंड को रिफ्रेश करते रहते हैं, उनको याद दिलाते रहते हैं कि हमारा भी एक ब्रांड मौजूद है. ठीक है, हम कहीं गए नहीं है. सो डेफिनेटली जो आपकी न्यू एडवर्टाइजमेंट के डिफरेंट जो टूल्स हैं, उन डिफरेंट टूल्स को न्यू ओल्ड कंपनीज भी यूज करती हैं. अगर वो देखते हैं कि कोई सेलिब्रिटी किसी दूसरी कॉम्पिटिटर मार्केट में मौजूद है, तो वो सेलिब्रिटी यूज करके उनको कॉल करके वो भी अपना एडवर्टाइजमेंट बनवाते हैं. अगर किसी ने कोई एग्जीबिशन या कोई कॉन्सर्ट करवाया है, तो वो दूसरी कॉम्पिटिटर भी वही काम कर रहे होते हैं, बिकॉज दे हैव टू बीट द मार्केट. It facilitates the job of the salesmen and dealers by introducing the product to the market. Now they are giving a good job to the salesmen और जितने भी marketing representative होते हैं, वो भी आपकी product को enhance कर रहे होते हैं by providing or giving you the more services. Okay. Now I proceed further. We will not go through the disadvantages. We will go through only advantages, because disadvantages are not included for the Karachi board.
Now we have another point. It reduces the price as the production volume increases, which in turn reduces the overhead expenses. Acha, this is very good point. It reduces the price. Very good advertisement is having the reduction in the prices क्योंकि market competition बढ़ जाता है तो customers के लिए मार्केट जो प्राइसेस होती हैं वो रिड्यूस्ड हो जाती हैं क्योंकि प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ जाता है, लोगों की डिमांड बढ़ जाती है. फॉर एग्जांपल सनसिल्क है या हेड एंड शोल्डर्स है, अब उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी हुई हुई है तो लोग उसको ज्यादा डिमांड करेंगे. अब जब लोग ज्यादा डिमांड करते हैं तो कंपनी उसकी प्राइस लो क्यों करने लग जाती है, क्योंकि उसका जो दूसरा कॉम्पिटिटर होगा हेड एंड शोल्डर का वो भी लोगों को कैप्चर करने की कोशिश करेगा. तो इन दिस वे कंज्यूमर की एक बेनिफिट ये हो जाती है व्हेन टू मार्केट्स two businessmen are doing the competition, so they are basically capturing the customers. उनकी customer capturing में हमारे पास prices reduced होती हैं, but quality should be remain the same. ठीक है, क्योंकि customers के लिए अगर quality reduce हो जाएगी तो फिर आप लोग अपने customer को lose कर देंगे. ठीक है, reduce prices as the production of the volume increases. इट इंश्योर्स द बेटर क्वालिटी, इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ गुड्स. अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि हमें क्वालिटी ऑफ द गुड्स वो डिक्लाइन नहीं करनी क्योंकि इससे आप अपने कस्टमर्स को लूज कर जाते हैं, कस्टमर्स हमारे कम हो जाएंगे. The last point, it increases the employment because production increases. Definitely advertisement से आपके customers ज़्यादा appeal होते हैं, they are more satisfied towards the product. उनको product awareness के बारे में पता चलता है, उसकी quality, quantity, उसके product, price, place, ये सब चीज़ें, और उसको हम promotion भी कर रहे होते हैं, लोगों को sampling करवा रहे होते हैं, लोगों को tasting कराते हैं, utilizations कराते हैं. कॉस्मेटिक है तो उसकी एप्लीकेशंस हो रही होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉल्स में आप जाएं या इवन शॉपकीपर्स विल अलाउ यू टू हैव योर टेस्टर्स. सो वो जो होती है उससे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होती है क्योंकि जब तक हम कमोडिटी को टेस्ट नहीं करते हम उसको परचेज नहीं करते. So now the companies are providing you the knowledge about the products and such knowledge will really increase the employment. तो हमारे पास लोगों को जॉब भी मिलती है इसी तरह जब हमारे पास एडवर्टाइजमेंट का रोल अच्छा होता है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर एडवर्टाइजिंग विच plays a very remarkable role in different sectors of your business. Okay, now moreover in your book we have another point, that is a differentiation between advertising and publicity. It is given in your points, and if in the examination it will come, you can write these points but you can elaborate in your own words. Okay. Now what is advertising? Some define it is a message to communicate. Basically advertising is a message oriented to the public. It is a paid form, yes, definitely in the start of the lecture I discussed with you that it is your paid form. It is a message which we need to communicate to the audience or to the buyers, and it is your non-personal. अगर कोई advertising करता है तो वो अपनी personally नहीं कर रहा होता है, वो personal वो किसी business के लिए कर रहा होता है, purposeful होता है, non-personal होता है. And it's definitely need a one sponsor. इसको एक sponsor की need होती है. हमारे पास advertisement के लिए एक investor चाहिए होता है because advertising really cost effective. Okay. If I talk about publicity, तो publicity तो आप किसी भी चीज की कर सकते हैं. You can hear a one common sentence that if you want to publicize something, you can tell in the tell to a woman. So हमारे यहाँ ये एक term use की जाती है but it is just a joke. Now come towards your publicity. It is a journal done in form of news articles, features or any written publicity can be. It is not authentic that much. ठीक है, in any form की जाती है जिसको हम sometime लोग claim भी करते हैं, or like it is just a word of mouth that you can spread it. It is no direct payment is involved in publicity. No need for the payment. Publicity के लिए कोई payment की जरूरत नहीं होती. It is without any payment. हम लोगों की हम भी publicity कर रहे होते हैं. अच्छा, इट मे बी पर्सनल, इट मे नॉट बी पर्सनल, ये दोनों होती है. ठीक है, नॉन पर्सनल भी हो सकती है. यूजली लोग पर्सनल को इससे लेते हैं कि हम ये खुद कर रहे होते हैं, ये हमारी अपनी विश होती है कि हम लोगों में बात को स्प्रेड आउट कर रहे होते हैं. इट्स स्पॉन्सर इज नॉट ऑलवेज नोन. वी डोंट नो कि हमें बात शुरू कहाँ से हुई थी, तो हमें स्पॉन्सर का पता ही नहीं चलता, बट हम उस बात को आगे स्प्रेड कर रहे होते हैं. So this is the main difference between advertising and publicity. Advertising paid form of media है. Publicity, it can be any general public who is talking about any relevant topic that related to your publicity. So this is your complete topic of your advertising we have gone through. I will give you the recapitulation.
that what we have done. Okay, we have done the differentiation between advertising, then I have done with you the advantages of advertising. This is your advantages, complete advertising, you can see on the screen. Then I have done with you that electronic media, in which we have television, cinema, and internet. And we have done the radio also. Then we have done non-electronic, that will be based upon your five factors. Okay, what are those five factors? Your newspaper, magazine, billboard, pamphlet, and your skywriting. These are your non-electronic. Okay, or you can see it as your print form. Yeah, it's your non-electronic. We have two types: print media and non-print media, electronic and non-electronic. You can write in both the ways. Then we have done yes, this is your advertising and the purpose of advertising. That what is actually advertising is, we have done in this in today's class. And what is the purpose of advertising, we have done. Then we have done the types of advertising, media and non-media, or you can say printed and non-printed. So okay, electronic and non-electronic you have done. So we have done all the medium of advertising, we have done the definition. This is all for today. Thank you so much for joining the class. Please be on time, be regular, so that you can get the proper lectures on time. Thank you so much. In the end, I would like to request you all to share my videos, to share my lectures, and subscribe and like my videos. And you can give your positive comments to the lecture which you have here. Thank you so much. Allah Hafiz, my students.